Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope all of you can hear my sound. Yes, sir. Yeah, sure. If you have any question from the previous lecture, you can ask before we go forward. सर एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो जी हमने टेबल की है, हम्म। इसके बैकएंड पे जो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, इनकी भी डेरिवेशन हमने करनी है? इसके पैटर्न पे क्या करना है आपने? जी सर, ये जो टेबल में पूरा कॉलम लिखा हुआ है 1/4 SNR, 1/2 SNR, जी इनकी हमने डेरिवेशन करने की ज़रूरत है कि बस इनके रिजल्ट्स को एज इट इज़ हमने इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है? हाँ, जाहिर है उसमें हमने डेरिवेशन से तो क्योंकि आपने हमने करवाए तो है ना? इसमें से काफ़ी हमने की भी हैं। जी जी जी। जैसे देखिए ना, हमने बीपीएस के और क्यूपीएस के की तरह से हमने बताया था। जी सर। बीपीएस के और क्यूपीएस के एक्चुअली ये जो 4 पैम है और 16 क्वाम है, आ, वो भी इनमें रिप्रेजेंट तो किया जा सकता है इनकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ बीपीएस के, मगर वो हमने वैसे नहीं किया ड्राइव। तो या तो एंड प्रॉब्लम्स में हो, फिर वो हो सकता है इंक्लूडेड, वरना वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है सर। और नॉन कोरेंट का तो हमने कर लिया था, डिफरेंशियल का भी हमने देखा था। और क्यूपीएस की और बीपीएस के देखें, वो तो हमेशा इसका जो 7 है वो 2 के गायब होने का है। देखें 4 से 2 हो गया, ये 2 से हाफ हो गया, ठीक तो वो ठीक। तो उसके साथ ही चल रहा होता है। मगर ये आगे बात थी कि इन दोनों का हमने एज इट इज़, तो ये जो 5 और 4 है ये हमने नहीं किया, ये कोर्स में नहीं इंक्लूडेड। तो ठीक। कोर्स में वो इंक्लूडेड है जो हम लोग मतलब कि जी नोट्स में या जी। लेक्चर्स में कर रहे हैं, या अगर कोई रिलेटेड एंड प्रॉब्लम हो, यानी कि जो नोट्स में उसने या बुक में उसने उसको रिलेट किया हो कि जी पहला देख लें। और वो भी ये कि प्रॉब्लम ऐसी हम कर सकते हैं जो विद इन दैट टाइम फ्रेम हो जाए। कोई जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं ले सकते जो इटसेल्फ है कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम टाइप हो जाए। Alright, so we will start with today's lecture. I think I have started the recording. Uh, Last time recording, yes, we are recording the lectures. So we will start with section 3.2, which is time diversity. Now, how can we achieve time diversity? Here it is written that you are average the fading of the channel over time. But typically what it means? Typically it means that we have seen channel coherence time for 2G, and last couple of lectures we saw it came out to be 80 symbols or order of tens. It could be hundreds of symbols. If coherence time, let us say, is 1000 symbols, this means till 1000 symbols the channel is highly correlated. So if you send your, let us say, code in one, let us say, time slot of that coherence time, and you send the another code also in that coherence time, and let us say in that coherence time you have destructive interference, so both of your symbols will be lost. Why not we apply the diversity technique, in which what we do, we send these coded symbols in independent or nearly independent fading gains. So if I send my one symbol, but I send, let us say, its copy in another coherence time. So even if it is fading in this coherence time, it will not fade in another coherence time. Independent time slots you are sending your uh, multiple copies of your data. This is also called interleaving of code words, and this was actually one of the cornerstone technologies for 2G, as you will be also seeing it. Now, let us consider a flat fading channel, as we are just doing flat fading right now. So let us say I have a code word. So it consists of L different symbols, of the total length is L symbols, and I send this through my flat fading channel. So each symbol will have क्या कहते हैं उसको, flat fading, one channel coefficient. You all know CN01. This is CN0 and not and all that Gaussian noise. This is the received signal. All right. So I have sent my one symbol, and I am sending all my symbols. And if I assume that all the symbols of my code word are sent in independent time slots, or which means they are sent in different coherence time, so all these HL will be independent. In that case, this L will be called the number of diversity branches, because you are sending your code word through L different paths.
L different diverse branches. And yes, the noise in each of those branches is again same, you know, Cn, 0 and non. The simplest form of coding is the repetition coding. So what happens in repetition coding? In repetition coding, you just repeat the same symbol. So you have x1, but x1 will be sent L times, or it will be sent in L different L different coherence time, or L different independent channels, through L different independent channels. Same symbol x of 1. So I can very well describe it why the received signal is x1 send through all those independent channels. So you will have this h into x1, this will come out to be an L cross 1 vector plus an L cross 1 noise, because you are receiving those L cross 1 symbols in with L cross 1 different noises, and then you are getting an L cross 1 vector. So all of them are now vectors. So at this point, you have actually now, with the start of this section, you have actually now gone into pure wireless field for chapter 3. Previously, you know, you were just studying simple digital communication, but now you are studying diversity. How can I combat my relay channels? And I know relay channel is also for wireless, but still you could very well see that now we are studying signal processing techniques that can combat my relay fading channel, in which we have just seen that the performance of communication techniques are very poor. Now another very good example of interleaving, for example, let us say this is my HFL, all right, and these are my HFL coefficients for L is equal to 4, 1, 2, 3, 4 symbols, all right. You can see HFL value is very good here, all not that bad also, but here in, let us say, 1 to 3rd slot, HFL is very, very small, so it is in deep fade. Now if I use this type of no interleaving, let us say I send my code word here, I send another code there, I send a third code here, the third code will be totally faded out. I won't be able to receive my x2. But what I do, I use interleaving. In interleaving, what I do, I take first a part from first code word, then second part from second code word, then, you know, third part from third code word, fourth part from fourth code word, and again I then select the first from the first, second from the second, the third from the third, or the second from the third, the second from the fourth, the second from the first, the second from the 0, and again I combine the second time slot, the third and the fourth, and so on and so forth. Now what will happen, even if I have fading, yes, I will lose this, but you can very well see that I have sent its replicas in the first, second, and the third independent channel coefficients. All right, so I can add these 3 and I can get back what I have already lost. This is called time diversity. You send its copies, yeah, in independent slots, so even if one goes down, the other slot is there to give you the lost symbol. सर ये सारे कोडिक सिंबल्स फिर भी इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, x0, x1, x2, x3? x0, x1 इंडिपेंडेंट नहीं, x0, x1 तो आपका डेटा है ना, डेटा को आपने किसी तरह से कोड किया, जैसे आपने ऑर्थोगोनल कोडिंग यूज की थी, उसके अलावा आप हजारों किस्म की कोडिंग यूज कर सकते हैं कि आपने बेस बैंड डेटा का कोई चेंज कर दें आप। अब आपने अब जो वायरलेस की टेक्निक्स यहाँ शुरू हुई, दे वांट टू send the code words intelligently over the wireless channels. You could have used this technique. देखिए ना यहाँ पे क्या था, आपने एक कोड को 4 दफा रिपीट भी किया, मतलब एक कोड में वो 4 सिंबल्स की कॉपीज थी, मगर आपने एक साथ भेज दी। यहाँ भी वही सिंबल है, उसको 4 दफा कॉपी करके भेज दिया, यहाँ भी एक ही सिंबल को 4 दफा भेजा, मगर इसका नुकसान क्या हुआ, आपने जब ये इस टाइम स्लॉट में जब वो डीप फेड में था, सारा ये कोड वर्ड टोटली ज़ाया हो गया, ठीक है। मगर यहाँ आपने इंटरलीव आपस में घुसा दिया उसको, इसका पहला ले लिया, इसका भी पहला ले लिया, ठीक है, और फिर इसका दूसरा यहाँ डाला, इसका दूसरा, और इनके भी दूसरे डाल दिए। तो अगर ये लूज भी हुआ तो ये तीनों तो बच गए ना। अब इन तीनों से तो आप कोई टेक्निक लगा के अपना डेटा जो आपका लॉस था वो गेट बैक कर लेंगे, इसे कहते हैं इंटरलीविंग।
सर अभी भी इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट है, यानी हर कोड वर्ड आपस में इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, कोड वर्ड को आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। कोड वर्ड को आप क्यों कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है? कोड वर्ड तो यस। एक डेटा सोर्स से आ रहा है ना, उसके बता आपने उसकी मॉड्यूलेशन कर दी। हाँ, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, चैनल इंडिपेंडेंट है। हाँ, आप ये ठीक कह है सर। सकते हैं। तो ठीक ये ठीक। जो चैनल के वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसके साथ वो इसके साथ। हाँ, और उस चैनल से गुजर के जो चीज़ आएगी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। जी मगर सर कोड समझ। वर्ड्स तो आपके डेटा पे डिपेंडेंट, जो डेटा था उसको आपने कोड किया और भेज दिया एक इंडिपेंडेंट चैनल, और जो उसको ऐसे भेजा है कि आपने उसको इंडिपेंडेंट एच के थ्रू भेजा। यहाँ पे जो एच था वो इससे इंडिपेंडेंट, क्योंकि हर एच आपको पता CN01 है, तो ये यस सर। बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इससे, ये इससे इंडिपेंडेंट। हाँ, चैनल के कमेंट आपने बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हर कोहेरेंस टाइम के बाद आपने पता है वो डिस्ट्रक्टिव वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाता है, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो। ठीक। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, now remember this x1, ठीक है? And you know x1 will now be received here, so 4 times it will be received. Already some will be faded, but still, you know, you will be getting a vector, ठीक है? You know, h into x you will be getting. So first of all, we have to transfer our detection from scalar to vector. This requires vector Gaussian detection problem. Again, this has not been taught in our previous courses, so we have to go and read its theory from this book. So we will be now going to Appendix A. So this is now the problem of detection in a vector space. Remember that the incoming signal, as we just saw, was h into x. H was a vector. You have and x was just a simple symbol. It was sent in h different independent different L different h, h1 h2 hl. So L size copies were made of one symbol, and they were sent through L different channel coefficients. So received signal was y into h of x, which is now let us say u, plus w. W is also noise, which we also know that this noise is independent Gaussian. But here we are at this point, we are, let us say, talking about the real domain. So this will be, the real Gaussian random variables, and this will be called the real Gaussian random vector. And its distribution will be now given by a vector n naught by 2 I. N naught by 2 I, right? Because it is only real. The variance is n naught by 2, and its covariance matrix, it comes out to be n naught by 2 into I. और this you can also see here. ये हमने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा था पहले, नहीं तो रिवाइज ही करवाया था, देखिए ना। All right, this will be n naught by 2 I. Again, this discussion will come so that you will be able to understand why this comes out to be n naught by 2 I in a while. Now, what will be our decision rule? So I will need to base my maximum likelihood rule in terms of vectors. So in terms of vectors, you will now have probability distribution in terms of vectors. Haji, has any one of you studied this form of a vector of a Gaussian random variable? Yes sir, 2 dimension तक की हो। चलो ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉपुलर से रिवाइज करवा देता हूँ. So you know the famous book, the standard book for stochastic. So if you go to its I think chapter 7,
There he has discussed, distributions for vectors. And a very fundamental rule is here. That rule will help us in determining this PDF of noise. At the same time, I will like to have इसको ऐसा करें ना. Yes, we will also make use of our notes, but the standard will be set by this standard book on stochastic. So this is the formula. If you want to write a distribution in terms of another distribution, and where these distributions are vectors, so you have a distribution in terms of one vector, but you want to represent that distribution in terms of another vector. Okay, so these are the same Jacobian transformation, but they are now in terms of vectors. So the formula is given as follows. So the distribution in terms of this y vector, which is consisting of y1 yn, will be the distribution in terms of x variable, which is actually forming the x vector, divided by the Jacobian. We know the Jacobian in terms of the Jacobian is actually the y functions. G1 is y, y1, y2. The derivative of these y functions, if I take y1, derivative with respect to x1 to xn, then I have g2 or y2, x1 to xn, so on and so forth. So I will have gn derivative with respect to x. Same thing was actually happen in the Jacobian for if you had we saw there earlier, if you had a random variable of 2, which was a sum or a function of 2 random variables. Okay, here we have just transferred ourselves into the vector domain. Okay, and this is a vector form of the distribution. Okay, and we will now apply this formula here in our notes. So how can we get this this normal distribution in terms of vector? Remember, this y is a vector, this ua is a vector. All right, y and ua, they were vectors. So we have to be very clear with this derivation so that we can go forward and also understand this thing and all the other things. अच्छा पहले क्या करें इसमें, क्या बता दूं आपको. So we are assuming this u could be either ua or ub. For example, I know for this case this u was equal to h of x, and your x could be plus 1 or minus 1. So this could be ua or ub, plus 1 h or minus 1. You can say this is or you could say this is plus a or minus a. This will become ha and this will become minus ha. All right, where h is a vector. So ua ub could be two different vectors, but they actually correspond to two different symbols, but they are now being represented as vectors because they are being sent through L diverse branches of H, so their sizes are L. Now with all that information, first of all we have to derive the basic mathematics from populace. So I just apply the same formula as given in the book. In the book, it is given this. I need to transfer it into my representation. So you generally our y is equal to sigma into w plus u. All right, where u is the mean of the noise. All right, sigma is the variance of the noise, and w is the standard Gaussian random variable, standard simple random, no vector shifter, no vector. Okay, a standard random variable, but it is now being shifted. But it is not being just shifted with respect to only a single random variable, as we saw in the book of our, that is covered in our undergrad, where you shift your random variable, let us say, with some mean to some other mean, from some variance to some other variance. But here we are shifting it from a vector form to another vector form. So we are saying that all those variables inside our output, that is equal to some variance, some mean, and some noise, and we know all these noise are independent, w1 w2 and upward, they are all independent. All right, so this is my function. I want to find my distribution with respect to y's in terms of these w's
where the root word, w will be equal to y minus u1 over sigma, and y2 will be y2 minus u2 over sigma, and so on and so forth. I can write this overall as y vector is equal to sigma w vector plus u, where u gives the mean, sigma gives the variances of all those vectors, all those independent w's, and so on and so forth. So first of all, I need to find the Jacobian. Jacobian is very simple. You will take y1, then you will take derivative y1 with w1, and then y2, then y1 with w2, and so on. So y1 is just this thing. With w1 you will get a sigma, and with w2 w3 you will always get 0, because there is no w2 w3 up till wn. We are assuming that there are n different variables, so they will all be 0. Similarly, for the second row, you can again see you again have these y's, alright, but now you will be taking derivative of y2, which will be sigma w2 plus u2 with respect to w2. First of all, we take with w1, so it will be 0 because there is no w1 in y1, w2 in y2. When you take derivative with w2, there will be a sigma sigma w2 plus u2, and so you will get sigma here and all zeros and so on and so forth. You will get a Jacobian like this, which will come out to be sigma n. I think this you have also done in your previous course, but I was revising so that we are at the same page. So this is your Jacobian has been found. I will put the value of this Jacobian in this equation, and this equation you all know this is a Jacobian, and these are the independent random variables. But I will write these independent random variables in terms of independent random variables. For our case we don't have yx, we have yw. So I will just replace x1, x2 by w1 and wn, where each of these w's is equal to these things. Now we all know that our joint distribution, they are all Gaussian random variables. They are all independent. Whenever you can write the joint distribution as product of their individual distributions. So I will just write them as product of their individual distributions, knowing that each of these w's, they are standard Gaussian random variable. So their mean is 0, their variance is 1. They will be just exponential e minus x square over 2, sigma square is 1, and 1 over under 2 pi, sigma is again 1. And because this will be coming n times, will become to the power n, and all these will be taken the product divided by sigma of n. Hari, any question you can ask? सर हमने जो आई था वो आइडेंटिटी वेक्टर था नॉइस में, जो टेक्स्ट बुक में आपने नॉइस की डिस्क्रिप्शन थी, n0/2 के साथ कैपिटल आई लिखा था सर टेक्स्ट बुक में। अच्छा, टेक्स्ट बुक में, जी आप जी हाँ, आप इसका पूछ रहे हैं, जी जी ठीक है। तो अभी ना ये अब हमने शायद पहले पढ़ा भी था कि W अगर आप एक वेक्टर है, if W is a vector and you want to, and we know it is a Gaussian random vector, उसको white noise vector भी कहते हैं. So when you write it, you will write its mean vector. This is mean vector, all right, and this is its covariance. This will be called its covariance vector, जिसको वो कहता है A इनवर्स A इंटू A इनवर्स. तो इसका कोवेरियंस जो होता है ना नॉइज वेक्टर का, वो होता है n0/2i. वैसे आप लॉजिकली भी सेंस बनता है कि भाई है तो सारा स्टैंडर्ड ही, तो स्टैंडर्ड का वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी होता है. और आपको पता है कि सारे के सारे n0/2 शिफ्टेड होते हैं. इसके अंदर सबकी वेरियंस n0/2 होती है, क्योंकि वो अभी हम एक ही स्पेस में बात करें ना, रियल स्पेस के अंदर, तो सारे के सारे n0/2 होंगे. ऑलराइट सर ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गया ना? हाँ जी बिल्कुल डायगोनल होता है ना. तो वेक्टर तो ना हुआ? नहीं, कौन सा वेक्टर नहीं हुआ, W वेक्टर है, ये तो मैट्रिक्स है भाई, ये तो कोवेरियंस मैट्रिक्स है. I एक मैट्रिक्स है, ठीक है. तो मगर मैट्रिक्स है, मगर मैट्रिक्स की वैल्यूज जो है सिर्फ डायगोनल पे रखी हुई, क्योंकि I तो आपको पता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी तो होता ही डायगोनल पे. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यस सर, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा ये. सर I एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी I क्या, आप क्या कह रहे हैं, I क्या है सर? स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. सर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, होता है स्क्वायर है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है.
आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दो, सही कह रहे ये हैं। तो ऑब्वियस है। हाँ, अच्छा, मैं जब आई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, वैसे आई स्क्वायर भी आई होता है, मगर आप ठीक है, चलें आप उस तरह कह रहे हैं वो भी ठीक है, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें ना कोवेरियंस की डेफिनेशन थोड़े से है, मैंने कहा हम थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी है पिछली एक दो लेक्चर्स में, होता है ना ई ऑफ एक्स इंटू एक्स ऑफ एच। तो आपका एक्स का साइज क्या है यहाँ पे, आप देखें एल क्रॉस 1 है, और एक्स ऑफ एच का साइज क्या है, 1 क्रॉस एल है। तो एल क्रॉस 1 इंटू 1 क्रॉस एल साइज हो गया एल क्रॉस एल। तो जो आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो एल क्रॉस एल का होगा, ठीक है। यहाँ पे सारे डायगोनल्स में आइडेंटिटी पड़ी होगी और बीच में इनकी n0/2 वैल्यू होगी। Alright, but we will be seeing this also in detail. But first of all, I just wanted to give this the standard form from our previous knowledge. हाँ जी, मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ है ना आपने पिछले कोर्स में ये सारा। सर इसमें विद रिस्पेक्ट टू हमने किया था इनपुट, लेकिन ये तो विद रिस्पेक्ट टू नॉइज हो रहा है सर। हाँ जाहिर, अब तो नॉइज ही करना है, कम्युनिकेशन में नॉइज नहीं होगी तो फिर क्या होगी, तो वो थोड़ा सा चेंज तो होता ही है ना, वो तो इतना तो आप खुद ही करना है। Alright, so these are all independent, so I can these are just exponentials, I can just add all their powers. If I add all of them, -1/2 will be common, and this will be just w1 square w2 square. Well, what is w1 square plus w2 square plus, this is nothing but the mod square. Mod square is actually equal to w1 square plus w2 square plus v square, so I can just write it like this. And so this is sigma n, all of this is same. Now I will put the value of w. So we have seen that w is actually equal to y minus u over sigma. So I can write this as y, this is y vector actually, y मैंने लिखा नहीं मगर आप लिख लें, y vector minus u vector over sigma mod square. So sigma will come out of mod square, so it will become sigma square, it is just a scalar, but this will remain as y minus u mod square. Sigma n will go here, you can take the sigma also inside, and then also inside the radical, this will become sigma square to the power n. And then we know that for noise, what is the value of sigma? For noise, we know actually this was standard Gaussian, which was 0, 1, but now we know that our sigma is n0/2 because we want to shift it to a n0/2 vector. So each of the random variables is n0/2 variance, so this will become n0/2. Sigma square will be n0/2 to the power n/2, 2 pi n/2. This sigma square will be n0/2. This will come out to be like this, and you can see this 2 is n/2. This 2 will cancel, and you will have pi n0 n/2. So this is the PDF of you can say white noise in real space, or in one or in only imaginary space, or you can say white Gaussian random vector. All right, each of the random variables was actually a Gaussian random variable, okay? And but when I combine this in terms of a vector, it will look as follows. This is a distribution of, so you will put your this is f of y, you can see f of f of y, you just put the vector y here and you will get its probability or its PDF from this expression. All right, so now after this derivation we can come back again, you can see this is the same form, n0/2 pi, all of it, it's same, you can just compare with the notes. But what is the change here? This was y minus u because the signal we were receiving was u plus sigma w. All right, but in our case we just see that, all right, this is u, but in our case this u, which is actually a full-fledged vector, u vector with u1, but this u could be either h of a, or you can say h or you can say ua, or it will be h of b, corresponding to, for BPS case this will be h vector into a, or it will be h vector into minus a. So you have two types of u vectors. All right,
For one any u vector, this will be y minus that u vector, y minus ua or y minus ub. So it will give you the probability, if it is ua, this will give you the probability of y minus ua. If it is ub, it will give the probability of a certain y with respect to when ub was sent or ua was sent. So you can just say the probability when ua was sent will be this thing. Just replace u by ua. Just replace u by ua because ua was sent. And the probability if ub was sent, just replace the same distribution with u is equal to ub. अरे सबको समझ आ गया? And yes, if we already know that ua was sent, so or we want to find this, then we will choose ua if and only if the probability of its distribution is greater than the probability of the other distribution. Has everyone understood till this equation? Yes, sir. Now Yes, again we see the same approach. You cancel these two terms, you cancel the exponential, you take the log natural and your exponential will cancel. You multiply both sides by minus, the sign will interchange. So we get to the very good conclusion. We will choose ua provided its probability is maximum, but its probability will be greater only and only if the distance between the received vector and the transmitted vector is less than the received vector as compared to the other transmitted vector which was not sent in that slot but with respect to the other vector. Sir. Again the same nearest neighbor rule as was for scalar detection. The only change is that we are just writing everything in terms of vectors. हाँ जी क्या कह रहे हैं? सर जिस तरह हमने पढ़ा था कि इनपुट जो है वो या तो प्लस से होगी या माइनस से होगी, तो वही चीज़ इधर हम कह सकते हैं यूए प्लस से या अगर लेट से तो यू भी माइनस से होगी. नहीं, थोड़ा सा चेंज हो गया ना, अब थोड़ा तो चेंज भी तो समझे ना. वो स्केलर था प्लस से माइनस से, अब क्या हुआ कि आपने प्लस ए को एल दफा भेजा है, तो उन सारे एल को आपने जमा करके एक वेक्टर बनाया आपने, उसे कहते हैं यू ऑफ ए. मतलब सर सेम इंफॉर्मेशन मैं कॉलम वेक्टर में भेज रहा हूँ एल टाइम्स. हाँ, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ. रिपीटेशन कोडिंग में क्या हो रहा है, एक तो मुझे इंग्लिश में होना चाहिए. व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर सेंडिंग द सेम, लेट अस से प्लस ए in L different you can say coherence time or L different channel coefficients. So this is a type of coding. You are repeating your symbol L times. So you will, when you will collect all those symbols, those L different copies, so you will be getting a vector, because in each value there will be h1 into a, then you will have h2 into a, and so on and so forth. So that will be u of a. सर ये प्लीज़ बता दें कि हम एक ही इंफॉर्मेशन को अगेन एंड अगेन भेज रहे हैं, इसका क्या एडवांटेज है? मतलब हम उसको कॉलम वेक्टर में एल पार्ट्स में हम भेज रहे हैं, हालांकि हम जिस तरह हमने स्केलर की थी तो उसमें भी हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे थे, लेकिन अब वेक्टर में आने की क्या एडवांटेज हमें मिला? हमने इसको मैप किया एल पार्ट्स के लिए. जी जी, हमें वेक्टर में यही तो मैंने आपको बताया, ये इंटरलीविंग कह रहे हैं ना इसको. हमने इसको h different में we have mapped this because even if some of the, let us say LH, they are in faded, the other h will not be fading, so you will get your replica out. सही ठीक है सर, मैं समझ. And you will be able to combat the Rayleigh channel. Previously you were getting very bad result, now you will see the result will improve. So, यानी डीप फेडिंग से बचने के लिए हम कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी टेक्निक्स. अच्छा, now we know that error probability could be the same with respect to UA, with respect to UB, because everything is same. All right. और ये इसे कहते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन. कि गॉसियन आइसो हर तरफ से सेम होती है, तो जितना इसमें एरर होगा उतने तो सेम होगा. अगर हम फर्स्ट में UB सेंड करते तो उस केस में ये होना चाहिए था y minus UB must be less than y minus UA. तो both are symmetric, both will give us the same result. So we assume that UA was transmitted, so received signal should have been y is equal to UA plus W. Okay, and we should have if we won't have an error, then in that case y minus UA must have been less than y minus UAB. But we say
that an error occurs. If error occurs, this means that this is not occurring. In that case, y minus ua is coming out to be greater than y minus ub. But if I say what is y minus ua? Y minus ua is equal to w. This means w mod is coming out to be greater, not as greater, because we are in error, greater than y minus ub. But what is y minus ub? Y is equal to ua plus w. So you can write this as ua plus w minus ub, or you can say w plus ua minus ub. In other words, error will occur if w mod is greater than w plus ua minus ub. So error will occur when this will be greater. Yes. So I can also write it another way, that its square, because this is just mod, this is just magnitude, its square must be equal, greater than its mod square. All right, square will also remain greater for error to occur. So this is also the same thing. Now again, book has missed a lot of steps, so we will be going to our notes. So this is already all explained. So error will occur when this is greater than this mod square. Now open this up. Now how can you open this up? Okay, you can open this up as follows. You can say mod square. Remember, w is a vector, u is everything is a vector, and if you want to find its mod square, the procedure is the same vector with transpose. This becomes its row, because these are all column vectors. You take the transpose, this becomes the row vector multiplied with the column vector itself. You will get L cross 1 into this will be 1 cross L, and this will be L cross 1. You will get 1 cross 1 as output. So each term of this will go with its relevant term, and so you have T coming here, WWT into this. असल में थोड़ा सा मिट गया, वो नोट्स में साफ आया नहीं है, मगर खैर कोई बात नहीं. चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे समझा दूँ. लेकिन इसमें ये होगा ये 2 टर्म्स हैं और ये 2 टर्म्स हैं. अब ये 2 ज़रबे 2, ये जो टोटल 4 टर्म्स आएंगी. पहली टर्म होगी WT इंटू W, वो यहाँ पे होगी, वो नज़र नहीं आ रही, वो यहीं पे है. फिर अब अगली टर्म कर सकते हैं UA माइनस UB इंटू T इंटू UA माइनस UB, जो यहाँ पे टर्म आ गई. ठीक है, एक टर्म हो जाएगी WT इंटू UA माइनस, जो यहाँ पे आ गई, और एक टर्म हो जाएगी दिस इंटू दिस, वो यहाँ पे आ गई. ठीक है, ये चारों टर्म्स आपने इसकी जगह लिखना है. यू विल राइट ऑल दीज टर्म्स हियर. हियर यू कैन वेरी वेल सी दैट एक्चुअली these two terms are actually the same. क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज लेके इसको करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेके इसको करते हैं, दोनों की वैल्यूज तो सेम है. बस ये कि पहले आपने किसको कॉलम बनाया या रो बनाया. इसको आपने यहाँ रो बनाया, इसको कॉलम रखा, इसको आपने रो बना दिया, इसको कॉलम रखा, तो जवाब तो दोनों के प्रोडक्ट का सेम आएगा. सो यू कैन जस्ट राइट इट एज UA minus UB W. This will be W mod square here. Then UA minus UB, this will be UA minus UB mod square. It's transposed into this will be UA minus UB mod square into 2 times. You can take anything. I take this thing, UA into UVT into W. This will become 2 times, because they two will add to give you 2, because they are the same. Then this cancels. I can take this term here, and this term remains here, and then I take this term. First I multiply through by minus. The greater sign changes, and then I take 2 here. This comes out to be this thing. सर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं. सेम उसी से भी यही चीज़ आ रही है. अगर हम a को कंसीडर कर लें W और b को कंसीडर कर लें UA माइनस UB, मतलब अगर वो आइडेंटिटी लगा दें तो वो ठीक नहीं रहेगा. मैं आपकी बात समझ गई, मगर आपने किसी और मेथड से कर रहे हैं, और से करें. मैंने तो अब एक सादा सा मेथड किया ताकि सारे स्टेप समझ आ जाए. आप कोई और मेथड आप कहना चाह रहे हैं? जी सर, वो आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम कर दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो
उसके थ्रू आइडेंटिटी। जी जी, यहाँ बस नहीं, यहाँ पे आप देखिए ख्याल रखें कि ये वेक्टर्स हैं सारे, तो आपको ट्रांसपोज की तरह खोलना पड़ेगा, वैसे नहीं आप खोल सकते इसको। अच्छा ये ठीक है वेक्टर्स, हर चीज एक वेक्टर है, तो जी वेक्टर सर। का मॉड स्क्वायर उसके ट्रांसपोज से खुलता है हमेशा। ओके इस तरह से ये भी देखें ना, ये यू ए यू बी का ट्रांसपोज था तो फिर ये बन गया यू ए माइनस जी यू बी मॉड स्क्वायर हुआ, ठीक है ना। तो ये ख्याल रखें कि यहाँ वेक्टर्स, वेक्टर्स को वेक्टर्स की तरह गेम करें। तो इससे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ यू दिस थिंग एंड दिस, ये तो वही आगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर is actually equal to the probability that this vector, actually now this vector is being transported with this vector, it becomes a scalar, so this scalar is less than this scalar value. So the book has discussed the interpretation of this thing and it makes sense. Remember what is this? This is ua, u minus u, they are two vectors and this is the, you know, the difference between them or the distance between them in the vector space. This will be a straight line, mod square will be the length of the line, all right. Roughly you can see this is depending the magnitude of the line or the power of that line from ua to ub with respect to minus sign, all right. Now what is this thing? This is what you are doing, you are actually taking the dot product of the difference of this vector, which we know ua minus u is actually the straight line. आप याद करें एम टी में भी ना आर माइनस आर डैश नहीं आता, आर माइनस आर डैश है ना। सर ये ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा पढ़ा होगा सर। अच्छा चलिए, ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ा हुआ, मैं तो खैर आपको वहां से नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको वैसे सादा बता रहा हूँ। ईएमटी में सब पढ़ते हैं ना आर माइनस आर डैश, आर होता है ना पोजीशन वेक्टर ऑफ द टेस्ट पॉइंट, आर डैश होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सोर्स पॉइंट। तो आर माइनस आर डैश क्या देता है आपको? कुछ देता है अब वेक्टर, डिफरेंस रहता है उसमें। हाँ नहीं, मगर उसकी वेक्टर इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए ना। हमेशा या बायोट्स लॉ भी ले लें या कूलॉम्स लॉ ले लें, एम्पियर्स लॉ ले लें, या क्या कहते हैं उसको, फ्लक्स डेंसिटी में r minus r dash represents the vector from the source to the test point. R minus r dash represents the vector which starts from r dash and goes up to r. So this ua minus ub actually represents a vector which starts from ub and goes up to ua, ठीक है। तो आप इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं w के साथ और उसको अगर लेस होगा तो फिर आप एरर में होंगे, ठीक है। इसी ने इसको ना थोड़ा सा यहाँ समझाया हुआ है कि इसने भी ड्राइव किया जो हमने ड्राइव किया, दोनों की ड्यूरेशन बराबर होगी। इसके ज्योमेट्रिक मतलब क्या है? इसका ज्योमेट्रिक मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू डिसीजन रीजन्स दैट आर बीइंग डिवाइडेड by a line which is perpendicular to this line or this vector, which is, you know, r minus r is a vector from सोर्स ub टू to ua, डेस्टिनेशन। source to destination कहते हैं। यहाँ इसने लिख दिया ub माइनस ए, मगर वो एक ही बात है, आप r माइनस आर डैश लिखें या लिख दें r माइनस आर डैश, मतलब या r डैश माइनस, वो बेसिकली इसका 180 डिग्री आउटपुट हो जाएगा। बेहतर था ये इसको ua माइनस ub लिखता है, क्योंकि ऊपर साइड डेरिवेशन ua माइनस ub वाली है, मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ub माइनस ua भी ले सकते हैं, वो एक ही बात है। ये लाइन तो सेम रहती है, आप 180 ट्रावर्स का उल्टा कर दें तो सेम चीज़ है। मगर एरर कब अकर होगा? रिसीवर लाइसेंस साइड आप प्लेन ऑपोजिट टू द ट्रांसमिट। अब आपने ट्रांसमिट किया ua, मगर रिसीव वेक्टर आपका बजाय ua के इलाके में लाई करने के, वो लाई करते हैं ub के इलाके में, ठीक है। ये इसने थोड़ा सा इसको फिगर में भी शो किया हुआ है, देखिए ना, ये आपका ub अभी ये वेक्टर्स है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है ua माइनस ub या ub माइनस जो भी इसको आप कह सकते, स्ट्रेट लाइन। आपने कहा ua और ub दोनों इक्वली प्रोबेबल हैं, एक ही प्रोबेबिलिटी के आते हैं। सो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है दैट इज एक्चुअली द बाउंड्री, ऑलराइट। So and this boundary will be exactly in the middle.
So if some point comes in this region, you will say UA has been sent. If some point comes in this gray region, you will say that UB was sent. अच्छा, अब notes मारे फिर इसने घपले मारे में तो हम यहाँ से. Now we have an identity like this, which is a upon 11, that if you multiply Gaussian random vector with this vector, you will get this as the output, and this you can also see here. This thing is the identity. So if I multiply my x by ctx, the result will be this thing, where you know AA are the covariance matrix of my x. So after multiplication, you will get this thing. Sorry. So I will use this identity here in my notes. Instead of CT, I have UA minus UB, X I have W. So you can see the same thing here. You know, the mean of X is 0 for our case, because W is a 0 mean. This will be totally 0. And then I have to put 80, 80. And for our case, you can very well see that 80, 80 is actually I n naught by 2. I under root n naught by 2. This A I told you was actually the covariance matrix, and we saw here also that you know the noise covariance matrix for under root n naught by 2 into I. Alright, that will also come clear in a while. So I just have put the values. I comes IT, you know, is finally will not be written. And then IIT, you know, again I, this becomes UM minus UB whole square, and this becomes n naught by 2. So this is the distribution of this vector. If I say that this vector has to be less than this factor, so I will first of all write distribution of this, and I will integrate so that I get all the values. So that I am able to, you know, evaluate this thing. Fine. So this is my, you know, normal Gaussian vector here. So it comes out to be a Gaussian random variable with this variance and mean 0. So I have this Gaussian random variable with this variance and mean is 0. And you know, this variance comes also here. And I need to integrate this random variable for all values less than this thing. So it will be from minus infinity up till this point. From minus infinity up to this point, I need to integrate my Gaussian to get the output. Now in order to solve this, I will use, you know, change of distribution. So I make a new distribution x dash
सर ये सब्स्टिट्यूशन की है हमने हाँ जी इंटीग्रल की लिमिट्स। जी जी, वो मैं यहाँ पे इसने नीचे किया उसने. So x dash is equal to x over this thing, and if I say it is this thing, then in that case this 2 will remain and rest of it will all come out inside this x dash mod square. And you know, similarly your dx dx dash will be this dx over this thing. So I will replace my dx with dx dash into this thing. So this will be dx dash into this, and this will all cancel with this thing. Limits minus infinity will remain minus infinity, but this ua minus ub, this will be changed to this x dash, which is actually x over this thing. So this will be x over this thing, which will be n naught by 2. So this was my x value. I will just put this x value here. You can see this will cancel with this, and one term will be left. So that term will come here. So my x dash will now go to this point, up to this point. Then hence my limits will be from minus infinity to this value. So from minus infinity, this I can also write as it is same as I am going from positive value of this into infinity, because you know Gaussian is symmetric. And rest we have a standard Gaussian random variable here, so I can well replace this by the famous Q function. सर एक क्वेश्चन है ये सर. हाँ जी बोले. सर ये हम एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए सारी कैलकुलेशन हाँ जी बताएं. प्रोबेबिलिटी एरर के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ. जी अभी वही निकाला. जी जी, मगर हमने एक वेक्टर से स्टार्ट किया था और उसको हम फिर एक स्केलर एरर प्रोबेबिलिटी में लेके आ गए. So you can see this is a standard Gaussian random variable, and this is the famous Q function. From here to infinity, this is Q. So Q will be this number will come inside the brackets. So the error comes out to be Q into this thing. All right, so we have covered the vector detection problem. Okay, now we go to the detection. So we have how we will perform this detection. So we have this y vector. You just multiply the y vector with h conjugate over h mod. Remember the same thing we were doing with the scalars. There we have h conjugate over h mod, but here this will be h mod of a vector, because now h has gone from a scalar to a vector. So you know y was equal to h into x plus w. So this will be h conjugate over h times y first term, and then times h conjugate over with the second term. Second term was w, while the first term was h into, let us say x1 was and it was actually h into x1. So h with h conjugate will become h mod square, and then h mod below, so h mod square, h mod 1 will cancel, and you will just have h mod x1. आरी सबको समझ आ गया यहाँ तक? सर x1 के साथ नहीं आएगा स्टैटिक इक्वेशन बैलेंस करने के लिए? देखिए ना y किसके बराबर था? y बराबर था h x1 प्लस w. आपने बस वो वैल्यू को पुट किया, तो h किया h कॉन्जुगेट के साथ, वो हो गया h मॉड स्क्वायर. नीचे h मॉड था, एक के साथ कट गया, h मॉड इनटू x1 आ गया. यहाँ पे रिपीटेशन कोडिंग की बात हो रही है ना. वी हैव सेड दैट x1 इज जस्ट अ सिंगल सिंबल, इट इज बीइंग रिपीटेड h टाइम्स.
So x1 तो बाहर आ गया वेक्टर से. Okay. ठीक है. ठीक. Now we have this thing. What will be the distribution for this? Remember here this is a vector, but vector into vector this is giving you a scalar, because this is conjugate. This will this is L cross 1. This will become 1 cross L. This is L cross 1. This will be 1 cross 1. This is actually giving me a scalar. So it will give me a scalar random variable. So he says it's if you do the calculations you will get a complex Gaussian random variable with क्या कहते हैं उसको with the 0 mean and not variance. Again he has not done the steps, but I had to do those steps so that you can understand. आज आपकी अगली क्लास कितने बजे? So you can see that W is CN01 and X is equal to AW. इसमें एक चीज रह गई शायद मैंने ना वो आप लोगों को चलिए वो तो मैं आपको बाद में करवा दूंगा. चलिए खैर. सो ये चीज़ आपने थोड़ा सा और एक करवाना चाहिए. तो उसके बाद देखिए वैसे आपको शायद समझ आ ही जाए. ये इसका कोवेरियंस है. कोवेरियंस का ए कॉन्जुगेट है जो यहाँ पे एन नॉट आई के बराबर है. पर इसको हम बाद में भी एक दफ़ा रिवाइज करवा दूंगा आपको. नाउ हियर वी हैड दिस वेक्टर व्हिच वाज एस conjugate WH mod, and we know W is equal to this thing. So this thing is basically representing a vector. So this will be a vector times W, where each W term is actually divided Gaussian is Cn into 0 and naught. This will be the vector. Of Cn 0 and naught I, which is actually Cn 0 and naught repeating L times. So I can first of all calculate H Hermitian over H mod, and H mod is just the powers, and H Hermitian we all know it is H1 H2 HL. It's transpose and conjugate, and this is being multiplied with W. So you can just multiply, take a scalar product of this with this vector. H1 will go with this, H2 will go with this, and so on and so forth. You can see everyone goes with its relevant random variable. Then you can open your Cn. Cn is real and imaginary, and not by 2 and not by 2. Each Cn is open. All right. Then I can also open my H1. Similarly H2 and so on so forth. H1 also is real and imaginary. And then I open these things, I will get 4 terms here. These 4 terms will come because of the product of these 2 terms. I will get these 4 terms, and then I can combine. Here you can very well see that this is H1 real and this is H1 real but imaginary. So they have the same values. I can take H1R H mod inside. This will become H1R square H mod square. This also goes inside. This also become mod square.
and this also goes inside. This also becomes mod square, and all of them, you know, they go inside all these terms. So you will now have all of these variances like this है. यहाँ पे इसको खोल दिया ना, j स्क्वायर -1 है, ये प्लस हो गया, ठीक है, और फिर इसको आप अंदर ले गए तो h स्क्वायर हो गया. इस तरह से ये j का रहा और ये h1 अंदर चला गया तो स्क्वायर हो गया. इस तरह से इसको भी देख लें, भी स्क्वायर हो गया. फिर अब आपने क्या करना है कि you can combine this h1r and this h1r because they are common. So if you combine these two, then these two will be definitely added. ये देखिए ना, ये रियल है, ये इमेजिनरी. जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, cn बन जाएगा. Gaussian, ये एक सिंपल Gaussian random रियल था और ये इमेजिनरी. व्हेन यू विल ऐड देम यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स Gaussian random वेरिएबल. वही जो सर्कुलर सिमेट्रिक होता है सारा. And n0 by 2 n0, this will become double, this will become just n0. Similarly, these two will be added and this will be also becoming n0. Then this is then you know these two you can add them up and they will be just, you know, added up. So it will become h1 mod square h1 this will become h1 mod square. H1 real plus h1 imaginary, this will become h1 mod square over h mod square. Then similarly you can add all the other complex Gaussian random variables. जैसे h1 है, अगला होगा h2 का up till hl तक सारे जाएंगे, ठीक है. Now all of them are above and below there are also powers, ठीक है, क्योंकि h mod square कॉमन है. आप कॉमन लेंगे तो ये ऊपर भी h mod square, नीचे भी h mod square, they will just cancel and you will get 1, and hence you have given the proof that the overall noise will be just c n 0 n 0. तो मैंने यहाँ तक करवा दिया आपको. अब बाकी जो है that will be doing the next, because nowadays we have less time, so we are not able to cover a lot of work. All right, if you have any question you can ask. Sorry आपका टाइम भी पूरा हो गया. ये 3.1 जो 336 क्वेश्चन है, काइंडली इस पे जरा मूव कीजिएगा. 3.36 वो तो अभी हमने की भी नहीं, वहाँ तो अभी हम नहीं गए ना. ओके ओके सर, 31 पे जरा मूव कीजिएगा. अभी तो हम जी 3.31 31 हमने कह लिया. हाँ ये सही है. नो सर 3. जी सर, अच्छा इसमें एक मैंने मिसकंसेप्शन ज़रा क्लियर करनी कि सर अगर हम y ऑफ m लिख दें और h ऑफ m और x ऑफ m लिख दें तो वो चैनल फिल्टर टैब के लिए होगा कि हम फ्लैट फेडिंग चैनल तब भी हम कहेंगे कि नहीं, अभी हम नहीं पढ़े ना उसको. दिस इज नाउ ओनली फ्लैट फीडिंग. फ्लैट फीडिंग में जैसे 1 से 1 चैनल we will be studying at a later date. First of all we have to clear our concept with respect to flat feeding. Flat feeding में only one coefficient is there. ठीक सर, हम h of m लिख सकते हैं x of m जिस तरह हमने जो मर्जी लेके हैं आप l m कर दें, मगर देखिए सारे एक वक्त में आएंगे ना, l l l l, तो यहाँ पे होगा m m और m आपका एक के l दफा जाएगा अगर आपके l डाइवर्सिटी ब्रांचेस हैं. नो सर, अगर हमने डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन लिखनी उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ. y स्क्वायर ब्रैकेट m जिस तरह हमने सर प्रीवियसली पढ़ा था. फ्लैट फेडिंग चैनल जो है ना वो y ऑफ m यानी डिस्क्रीट प्रेजेंटेशन में m डिस्क्रीट टाइम है. ये भी सारा डिस्क्रीट है, ठीक है सर. हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे ख्याल रखिए, ये भी सब डिस्क्रीट ही वैल्यूज हैं. देखिए y वगैरह, मगर ये बात है कि ये l डिफरेंट मतलब कि डाइवर्सिटी ब्रांचेस से मुझे आउटपुट मिल रही है. वो हो सकता है अब यहाँ पे हम चूंकि टाइम डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट टाइम्स में कभी ये आ रहा होगा. वही सिंबल जो है ना डिफरेंट रास्तों से डिफरेंट एज से होते हुए आपको मिल रहा है, तो आपको बहुत सी कॉपीज मिल रही हैं अपने एक सिंबल की. अच्छा सर, एक क्वेश्चन था इसमें कि सर हम ये भी कह रहे हैं कि फ्लैट फेडिंग चैनल और सिंगल चैनल कोफिशिएंट होगा और हम उसको एल मल्टीपल पार्ट्स में भी बता रहे हैं सर, वो तो चैनल फिल्टर टैप नहीं हो जाएगा? ये ज़रा बता देंगे सर. नहीं वो आप दो सर हम सब्सक्रिप्ट के लिए जी सर हम आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं. आप कंफ्यूज हैं. चैनल आपका अभी भी फ्लैट फेडिंग है.
लेकिन सर वो फिर जो फ्रिक्वेंसी वक्त, बात तो सुन लेना पहले, बात तो सुने। जी सर। फ्रिक्वेंसी रेटिंग होता है कि जब एक वक्त में वो 4 डिफरेंट से आ रहा है, जो वो डिफरेंट पाथ्स हैं वो डिफरेंट डिले स्प्रेड्स पे हैं बाहर, वो वहाँ पे सिंक के साथ होता है ना, हर सिंक पे शिफ्ट होता है, तो डिफरेंट डिले स्प्रेड्स, यानी एक के खत्म हुआ फिर दूसरे सिंबल उसके थोड़ी देर बाद आ गया। यहाँ पे तो आपके पास है ही फ्लैश की कोई कॉपीज नहीं, बस एक ही कॉपी है, मगर आप जानबूझ के उस सिंबल को अगले कोरेंस टाइम में भेज रहे हैं। यहाँ आप कोरेंस टाइम में रेप्लिका कर रहे हैं, वहां पे जो थी वो आपने डिफरेंट डिले स्प्रेड पे आपने उसको भेजा हुआ था, तो सिंक के साथ था ना, W(TS) था, तो वो डिले स्प्रेड था ना, एक डिले स्प्रेड में मतलब डिले स्प्रेड में सारा आ गया ना, मगर वो जो आपका एक डिले स्प्रेड है वो 5-6 कॉपी से बन रहा था। अब तो आपकी वो उधर एक ही कॉपी है, बस वो एक ही कॉपी बस आपको मिली H1, बस खत्म हो गया, और इसमें 3-4 कोई कॉपीज नहीं है, एक सिंबल आएगा एक ही सिंबल। हाँ, अब आपने जानबूझ के दोबारा वही सिंबल भेजा है, वहां तो ये था एक सिंबल 4 दफा आ रहा था ना के पास के, तो एक ही भेजा था आपने, मगर यहाँ पे तो आप 4 दफा भेजेंगे, 4 दफा चैनल से मल्टीप्लाई होकर आएगा और डिफरेंट चैनल कोएफिशिएंट से। सर यानी एल हमारे पास कोडिक सिंबल्स हैं, जैसे यानी इतने नंबर ऑफ सिंबल्स एल हैं। पाथ्स हैं, एल नहीं, एल आपकी डाइवर्सिटी पाथ्स हैं, ये आप याद रखें। चलिए मैं अब लेक्चर एंड करो, टाइम काफी हो गया। ओके तो सर आपका ठीक। नेक्स्ट लेक्चर नहीं है, उस दिन तो आप लोग इतना शोर कर रहे थे कि नेक्स्ट लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर, वो कहाँ चला गया? सर नेक्स्ट लेक्चर और था ट्रैवल हमारा। एंड द रिपोर्ट ओके सर, लव। अभी 2 बजे शुरू हो गया आपका? अच्छा ठीक।